guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing very well in your lives. So today is the day, I don't know which day it is, but I am filming this video where I am going to tell you about some products, and this is going to be another day of my 30 days of diva. So that's what the hashtag is. I think that is good, and if you have any other hashtag in mind for this particular series, you can put it down. Maybe next time or maybe in this video I can include that in my coming videos. So let's get started with what today's video is all about. Now if you don't know, today is Teachers Day. I am shooting this video on 5th of September. That's why you can see me all wearing this kurta kind of thing, because I just attended this Teachers Day and it was really amazing. Like the way these students, they performed and managed everything, it is beyond world experience. So I don't know when you are going to watch. If you are a teacher, so happy Teachers Day to all of you. Now let's get started with today's video. Know me, I am Atri and I am running this series on my channel where I'm going to put on each day I'm going to put every single day I'm going to put one video till 30th of September. So yeah, join me, because on 17th of September is my birthday and I wanted to do a series before I turn 30. Now I have so many products with me of Just Herbs. Actually it's just one product and I am shooting this video second time, because first time the lighting wasn't very good. So I thought of trying this brand because I was seeing so much of advertisement on Instagram and even on Facebook. So I thought of trying something from this brand, but I didn't want to spend a lot of money. तो मुझे बहुत सारे पैसे नहीं उस पर खर्च करने थे. That's why मैंने क्या किया, मैंने उनका ट्रैवल पाउच जो होता है ना, ट्रैवल एसेंशियल, मैंने वो एक पिक कर लिया. तो जो मेरे पास है वो है ऑयली वेरिएंट के लिए, और इसके अंदर 7 प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में मैं आपसे अभी बात करूँगी. एंड दिस रिटेल्स फॉर 595 रुपीज़, विच आई थिंक इज़ नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज देर आर 7 प्रोडक्ट्स एंड लाइक डिसेंट आपको अमाउंट मिल जाता है. आप अच्छे से उसको ट्राई भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई हैव एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग. दिस इज़ द पैकेजिंग विच इज़ वेरी इको फ्रेंडली. नाउ मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एंड मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लगी. ना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको कुछ और अच्छा लगा हो. सो या, डू नॉट जज मी ऑन दैट बिकॉज it can be vice versa. Let's get started. So the very first thing which I have is this one. This is the Just Herbs Silk Splash Neem Bitter Orange Rehydrant Face Wash. And yeah, this is what it looks like, and it is of 25 ml. And as you can see guys, I have almost finished it. Yeah, because this product right here is so amazing. I mean, I can't even tell you, and I really enjoyed using this one. It has a very gel like consistency, if you can see here, and it smells so refreshing, so amazing, and it is really good for someone who, even if you're having normal to dry skin, you can use it because it is not drying on your face. It gives a very good glow to your face, and your face looks so radiant. So yeah, this is the thing जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस पूरे किट में से. अगर कुछ भी आपको एक चीज़ लेनी है ना, तो आप ये ले सकते हो. एक और चीज़ है, उसके बारे में भी बताऊंगी. सो या, एंड ऑल्सो गाइज, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस प्रोडक्ट्स ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि या इंस्टाग्राम पे आपको इसकी ट्रायल करके वहाँ आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज ऐसी चीज़ें मैं वहाँ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. या अदरवाइज़ जो यूट्यूब की वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं एक प्रोडक्ट यहाँ ट्राई करके अगर आपको दिखाऊँ, एंड देन यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड. Now the next product, now I am not picking all of these things in any order. जो भी हाथ में आ रहा है मैं बता रही हूँ आपको. So the next one is this one. Let me read out. Okay, so this is their Nosun Jojoba Wheat Germ Moisturizing Sun Protection Gel, and it is also of 25 ml. Now it seems white in color, as you can see here, and
इट स्मेल्स लाइक वो जो लैक्टोकैलामाइन की खुशबू आती थी ना, वैसी खुशबू है इसके अंदर. एंड लेट मी टेल यू, दिस डिड नॉट सूट माई स्किन गाइज. इट जस्ट मेड माई स्किन सो इची. और उसने मुझे ब्रेकआउट भी दिया. हालांकि मुझे ब्रेकआउट बहुत कम होता है, बट स्टिल this product, it gave me a breakout. So I won't suggest you to go ahead and buy this one, because it has wheat germ and I think wheat germ does not suit my skin. So that is why probably मुझे इसने breakout किया, and I really didn't like this product. Otherwise ये बहुत ही light है, ये बहुत अच्छे से आपके face में absorb हो जाता है, but yeah, somehow it did not work for me. Now let's talk about this one. This is Fa Gel, and this is Instant Glow Beauty Gel. It has madder root and holy basil, and it is of 15 grams. Now this is what it looks like. If you can see here, it looks somewhat greenish in color. Again, all the fragrances which everything is having here is very Ayurvedic sort of. तो मुझे काफ़ी पसंद है. एंड ये वाला जेल मुझे अच्छा लगा बिकॉज स्पेशली इन समर एंड स्पेशली इन मॉनसून, जब आपको हेवी क्रीम्स नहीं लगानी, यू कैन गो एंड ट्राई दिस वन बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव अ कामिंग इफेक्ट ऑन योर फेस. सो मुझे ये अच्छा लगा. एंड आई डोंट नो कि इसमें ग्लो होता है या नहीं, बट या आई रियली लाइक इट बिकॉज इट इज़ वेरी सूदिंग and calming for my skin. Now coming to the next product, which is this distilled rose water, and as you can see मैंने पूरा यूज़ कर लिया है. एंड क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम थी. सो इसमें बहुत ज़्यादा, आई थिंक 5 ml थी क्वांटिटी, एंड आप देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो गया है. नाउ आफ्टर द फेस वॉश, इफ़ आई लाइक समथिंग, इट इज़ दिस रोज़ वाटर. दिस इज़ अमेजिंग गाइज. आई हैव यूज्ड सो मेनी रोज़ वाटर, बट सबसे अच्छा जो रोज़ वाटर है ना, मुझे जस्ट हर्ब्स का लगा. मैंने खादी का यूज़ किया है. आई यूज्ड गुलाबरी, ऑल्सो यूज्ड द नेचुरल वॉश, बट दिस इज़ अमेजिंग. If you're looking for a good rose water, you can try this one. देख सकते हैं पूरा ये खाली हो गया है. Now coming to this is their Shatpatri body wash. Basically it's a body wash. It has wild Indian rose and it is very gentle body wash. Smells amazing guys. Smells like roses but not overpowering. Like it's a जो वो भीनी भीनी खुशबू होती है ना रोज़ की, इसकी जो खुशबू है ये बिल्कुल वैसी है. एंड आई रियली इन्जॉयड यूजिंग दिस, एंड मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी किया है. अगर आप देख रहे हो, आई एम ट्राइंग सम अदर बॉडी वॉशेस ऑल्सो. तो हो सकता है इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग सो मेनी थिंग्स. बट फॉर स्ट्रेट 2 weeks आई यूज़ दिस वन, एंड मैं बहुत थोड़ा सा लेती हूँ और बहुत अच्छे से ये लैदर होता है. आई रियली इन्जॉय यूजिंग दिस गाइज. सो इसको भी मेरी तरफ से थम्स अप है. Now coming to the next thing, which is this one. This is the Lively Clean Exfoliating Face Wash. तो इसमें ना बीड्स हैं छोटे छोटे. अगर आप देखेंगे या अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो इसमें ना बीड्स है. तो मुझे ना ये वाला उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक डेली वॉश के लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है. और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस वन because it can cause irritation. I personally have little sensitive skin, especially अभी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है क्योंकि मैंने केमिकल एक्सफोलिएशन शुरू किया, तो उससे मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है. एंड मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी यूज़ करना. इफ़ यू आर अ टीनेजर, अगर आप टीनेजर हैं, और इफ़ यू आर in your early 20s, then you can give this one a try. एंड अगर आप अपना फेस एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करते, सो दिस वन इज़ गुड इफ़ यू आर यूजिंग देन. क्योंकि इसके अंदर जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं ना, ये थोड़े मुझे ग्रिटी लगते हैं. सो आई पर्सनली डोंट लाइक यूजिंग दिस वन. या सो मूविंग अहेड, आई हैव दिस इज अगेन an Instaglow Almond Complexion Face Pack. So it has licorice, it has Indian madder, and it has cinnamon. And if you can see, ऐसा दिखता है कुछ. It also has sandalwood, I think. या तो कुछ ऐसा है. Now ये जो है ना, ये मुल्तानी मिट्टी जैसा नहीं है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट्स वेरी जेंटल. बट अगेन मुझे वही प्रॉब्लम आई. सो व्हेन आई वॉश्ड माई फेस यूजिंग दिस वन, मुझे ग्लो तो कहीं नहीं दिखा, बट माई फेस बिकेम अ लिटिल ड्राइड अप. एंड लेट मी टेल यू, आई हैव ऑयली स्किन.
बट स्टिल जो ये वाला है ना, इसने मुझे ड्राई कर दिया. सो आई डोंट नो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, तो अगर आपने ये यूज़ कर लिया तो आई थिंक बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको. सो पर्सनली इट्स नॉट माई फेवरेट. नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग विच इज़ दिस इज़ अगेन अ स्किन ब्राइटनिंग जेल. इट हैज़ मुलेठी एंड खसखस. ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, पीचिश सा कलर है. And I am not the biggest fan of this thing. Yes, so this one is not my favorite and I really don't like the consistency of this one, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ इसको यूज़ करके. एंड जस्ट अनदर प्रोडक्ट फॉर मी. सो माई रिकमेंडेशन इन सब में से मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी वो है ये 3 चीज़ें. फर्स्ट इज़ दिस रोज़ वाटर. Second is this face wash, the bitter neem orange face wash, and the third one is this Shatpatri lotus Indian wild Indian rose gentle body wash. So these are the 3 things which I'm going to tell you to use. And if you want to use Fajal, you can go ahead क्योंकि वो भी ठीक ठाक है, but मेरे favorite ये तीनों चीज़ें हैं. I hope you guys enjoyed this, and if you want to see further regarding these products, you can head over to my Instagram. There I always do these kind of videos where I talk about, where I apply the product and show you how it looks. So yeah, that is about it. I hope this video was helpful for you guys, and let me know in the comment section how you are liking the series. I will be more than happy to know. I will see you guys in my next video next day, that is tomorrow. Yeah, till then you guys take care.